Hi everyone, my name is Agrim and I welcome you all to Bloggerana Bombay. Today we have Prashant from Fantasy Football. And how's it going, Prashant? It's going good. Everything is well here. Hope all our Yeah, viewers are doing well as well. What about yeah. you, Arjun? I'm doing absolutely fine. I'm just very eager on the draws. Let's see what's going to happen today. What do you think is going to happen? You think are Uh, there going well, to be any surprises? the thing is that the group stage almost every year at least throws Hmm. up for one group of death, right? One group which is like always supposed to be tough. So that would be Yeah. something which I'm looking forward to. Okay. Okay. So I have a question. You think which team is going to be like the toughest to beat? At least so far, it does look like it will be Manchester City. Because Mm-hmm. after the acquisition of Erling Haaland, I think Yeah. they have definitely become a force to reckon with. In the previous years, obviously, they have Mr. Striker. Pep has been playing with a false nine, and maybe that's where they've been lacking. So All right. they now have that one missing part as well. Similar to, you can say, how Liverpool had a difference in their squad, right? Like after they got Virgil van Dijk. So maybe that is the Yeah. kind of effect Erling Haaland will have. But obviously, we do Mm. have the regular contenders, the regular culprits such as Real Madrid, Barcelona. Not Barcelona so much this season. They will go far. Mm. Prashant, I think your your mic has stopped, and we have lost Prashant for a minute. So guys, what do you think? What is the best possible group in your opinion? Please drop down a comment in the section, and we can assess what are the chances of every team to succeed in this beautiful competition called the UEFA Champions League. Hi, Amshay. What up? Amshay is here, by the way, Prashant. I am sure. Yeah. Sorry, Agrima. I just Yeah. got a call, so I have to attend that. Uh, All right. yeah. No issues. Apologies to our viewers. Yeah. Mhm. So, So, I was saying that we will have the normal teams, the regular contenders up there, hmm, and let's see where the draw takes us. I can see that Yaya Toure is already on stage. yeah, The man who is yeah, solely responsible for Pep Guardiola not winning the Champions League. So that's yes, not a good person though. omen for Man City. Yeah, Yeah. So we have another comment by Jigar Bhatt. Thank you for taking the call. yeah, yeah. Okay. He's telling me, "You are welcome, Jika. You are welcome." So Hmm. you was wondering where I was. Jiga Bhatt called me. So I Okay. attended his call. And now, yeah. All right. All right. So yeah. Uh, what do you think about the Champions League draw, Jiga? But are you following that right now? So if you are, Uh, let us know. Yeah, and and MCA says Man City, Barca, Inter, and Rangers. That's a good, what do you Rangers. call, group. It's a good group. Yes. Uh, Yeah. but that is one possibility. Yeah, Could be. Yeah, and that could be. uh, let's see. Okay, I see Hamid Altintop is there. He is about to start. I mean, he's also making a speech as of now. So let's see. I think Hamid Yeah. Altintop has been there on this stage before. I've seen him quite a few times in these UEFA presentations. Uh, he seems to be a Hmm. regular. Yeah, yeah. Yeah, Surya, Mhm. not so much. He seems to I be there mean, solely for the purpose to yeah, stop Man City from winning.
Yeah, but I think somehow I think Man City is like very well equipped. I don't know, somehow they couldn't win in the last two seasons. They were like very well equipped, and somehow they couldn't do it. I mean, possibly you can see like Real were also like up to the mark. When it came to the semifinals. Don't Yeah. you think so? No, the thing with Real Madrid is that they have the big time experience, and no matter, Mm, there are some. Have to be honest, I believe it mm, was Ancelotti was actually a very crucial factor in the fact that yeah, uh, they won because he knew how to play it long. See, you Man City are a good side, right? Man City are a definitely. system-based side. Yep, Uh, so all of these system-based sites, no matter how complicated the system is, there is always, you know, yep, if you do some basic old school things right, you always get them done. And Ancelotti is an old school manager. I yeah, think he's one of the last few old school managers, and he still knows how to do it. So I think that was a mm, crucial factor. Pep, on the other mm, hand, is known for overthinking big games, right? mm. So That's true. uh, That's true. that is one part of it. Besides, I don't think I've seen that on whoever is on like on paper the favorite to win the Champions League has not won it in recent years. So uh, Yeah, that is also one of the reasons that I think Man City didn't win. It's always been the trend. Like once you are the favorite tag does not really help any team. yeah. Look at Chelsea's. I mean, this is the best example for Chelsea. When Chelsea was taken over by Abramovich in 2003, right? 2003 or 2004, if I'm not wrong. So what he did, he just made that squad just go well, and basically once that team was able to understand their full potential. I mean, look at how they went on to win the Champions League in 2012. Hmm. I think it Yeah. takes time. I mean, certainly it took time for them to win the Champions League, but I think City can possibly do the same thing, possibly this season. Don't you think so? After like too Uh, many failures. Yeah, like after like at least at least 10 to 12 consecutive campaigns where they've been doing well and failed. So, Yeah. yeah, but see, that is not something which we can predict. We can only predict the closest which we can predict in the Champions League is up to the last stage. Yes, the Mhm. quarterfinals. Yeah. But post quarterfinals, you just cannot predict what will happen because Yeah. we have had sides like Ajax coming through to the semi-finals. We have had our shares of teams like Monaco, Lyon. So those Mhm. there is always one club or two clubs in some cases which will end up surprising. Even Spurs Yeah. can be put in that category because they were also one of the surprises back then. So Mhm. uh, uh, if, I will not say that yeah this could be the season for City because uh, Hmm. the season can be for anyone. I honestly All feel right. that the heavyweights in will be the ones who would be more likely. Again, the traditional ones: Bayern Munich, Barcelona, Real Madrid. PSG, Hmm. similar to City, may just go a little further ahead this year because of Okay. Christophe Galtier. Hmm. They Yeah. might again reach up to semis, but they will also not Hmm. go any further than that. Hmm. What do you So we think? are all. Ah, yeah. So Hmm. I think I'm still somehow convinced with the lineup that City has. Because looking at their game yesterday also, even with the second squad, they managed to basically upset Barcelona as well. I mean, just scrap that those two unnecessary errors. But the game that City played yesterday was phenomenal. You need to give them credit. Pep has built a monster of a team. Hmm. That he has, no doubt Yeah, about it. Uh, yeah, so I have I know the score line 3 all, but I have not actually seen the yeah. highlights of that much. I know that it was a thriller. I Uh, think with City and possibly I'll give the what's PSG. I'm not convinced. Even though they have Messi and Mbappe and Neymar, they somehow will screw it up probably in the big games.
possibly in the quarterfinal against a big team because their Yeah, but defensive line, their their back line is absolutely shabby. that's exactly what City have also done. Man City have been doing the same thing, haven't they? But So but look at uh, their like fullbacks, no? Their fullbacks at least come and defend, no? see that is something which we will only come to know at the end of the season at that particular That's point. true. Because Yeah, remember the new coach that they have, the new management that PSG have, right? Uh, yeah, you know, Christophe Galtier, he had made sides like Monaco and Lille before then. So yeah. those sides have also had success in the Champions League. So That's true. uh, to answer your question, right? I think that PSG can like like further than they usually do. They will not be one of those teams who will just be dumped out of the last 16 Mm, for no reason. And mm, that's where I said that's why I compared them to Man City, right? They will go mm, further ahead. They will be closer to Man City mm. in those terms, like which in the race that they have amongst themselves. But Yeah. they will not win the league. They still have some way to go uh, until they actually win the Champions League. All So right. that big time pressure, the big game thing is just something which Mm, cannot be bought. You know, yeah. it just comes with the club itself. Once it actually becomes the proper club mentality, only then these things happen. Otherwise, no. All right. All right. Yeah, So guys, I'm really sorry. I was just having my food at this time. And what a time to be yeah, there for the UEFA Champions League. And it's a very exciting competition. Back we all go all back to 1955 when it all began. 1955. Now it's 2022, right? It's almost how many years now? 67 years, I think, if I'm not wrong. yeah. Almost 67 years, right? What a So it what a started beautiful off competition. initially as yeah, Yeah, it started off as the Cup Winners' Cup, then the European Cup, and now yes, finally the Champions yes. League. So it has Yeah. evolved, and it is. I mean, in the greater perspective, okay, let me just see what she's saying. Ronaldo to Sporting. Okay, yes, sir. Okay. Let's see if he does go to Sporting. UEFA Yes, so Merchant much. is now off. Okay. Oh yeah, let's see, let's see. I don't know. 7 year anniversary of 7 years. winning the league. Hmm. Hmm. For Barcelona. Then Barcelona. for Barcelona last Barcelona. won in 2015. They won in Ah, 2015, right? okay. Yeah. Okay. All right. Exactly. I'm sure 67 bloody years it took for Ah, this beautiful competition to start. I mean, like I am like I just wanted to say, like in the initial competition, like how the competition was set up. It was all based on invitation, by the way. You remember that, right? yeah. It was all based on invitation back then. Again. Uh, Yeah. Are you able to hear me? And we have lost Prashant again due to some internet issues. So I'm sure, what do you think? What was the draw going to be? Yes, Don Prashant has become Gone Prashant now for the moment. So now it's part one. Teams from the part one are the ones who have won the league. Now it's going to be exciting now. It's going to be very exciting. What okay. happened? Uh, Prashant, what hey, happened, I'm Prashant? You Shay. Tom got a call. Prashant. Yeah. You Again, got a can you hear call. me? Yeah, you can No, absolutely. I don't know. My connection is just my All right. connection just fluctuated. I believe. Oh, no, it's Yeah. not a I problem. switched from my Wi-Fi to my data again. Yeah. Hmm.
So UCL will and scam Liverpool, Madrid, and now PSG Barca. This is what MK says. UCL will scam Liverpool, Madrid, and PSG Barca. So who do you think is going to win? uh, I didn't get the comment. So Champions League will scam Liverpool, Madrid, Madrid and and PSG PSG Barca, Barca. and then they Hmm. will be in So the then same who? group. Yeah, yeah. So if that does happen, then I think the Spanish side will win Hmm. those groups. Yeah. Still, Yeah. they have enough Somehow experience in them. somehow I feel sometimes there is a Spanish bias. Sometimes, not usually, Yeah, not every time. Let's see what the yeah. group It is. is. It is. Yeah, it always seems to be the case. But I'll tell you Yeah. what, like even traditionally, if you look at it, like Yeah. historically, Yeah. no Yeah. matter how good the English teams have been or the uh, the Premier League teams have done, they've always struggled against really good Spanish and Italian sides or even German sides in some cases. So Yeah. because they have that proper pedigree, like Oh, by the way, the real thing is first, the real first, thing. You can only just buy up to certain uh, parts of it, Bayern is part right? part one, Group C. The first team is Bayern, by the way. Oh, Group C. Okay. Alright. Yes. Okay, just a second. Let me just restart my Wi-Fi router. Okay, just a second. Yeah, sure, sure. Why has better coverage than your special service provider? Yes, MShay, I agree with you. That's a good one, I'm saying. What C? Now you have Bayern, and the next one was Eintracht Frankfurt that won the UEFA Europa League last season, beating Barcelona by 3 goals to 2 at Nou Camp. Moving on, let's see what the next one. What's the next one? It's AC Milan. AC Milan is going in which spot? We have to see it. Possibly spot E or D. Group E. Group Yes. E. Okay. E- Okay, so the first spot is getting over now. I hope it shouldn't be bad. Real He is the Madrid, one to avoid them. Yeah. yeah. Real Madrid is Group F, Oh, Group F. Okay. and we have Mr. Devi. Divya, how's it going, Divya? What's up, guys? What's up? What's Yes, up? कैसे हो? uh, it's going brilliant, guys. Bayern is Group C, by the way. Man City, no? Oh, okay. Man Man City का City. pot. Uh, Man City have been run out of the pot. Hey, Divya. Man, What's up? Hmm. What's up, Man City is Prashant? How Group are G. you? Man City is Group G, by the way. Okay, Group G. I'm good. I'm good, Divya. You finally made it home. And the last one is, I think, PSG. I think it has to be PSG. Just give me a minute, guys. Yeah. I'll Oh, just be back in a minute. what? Yeah, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Okay. Let's see. Paris Saint-Germain. Group F. This is going to be very interesting. Yeah. Okay. Pot two has Liverpool in it, Chelsea in it, Okay, Barcelona, okay. Juventus, Atletico. Atletico. Already nothing. Yeah. And Sevilla. Okay.
let's see which of these teams go into the which of these groups. Yeah. Okay, Leipzig are also a part of it. Spurs. Well, Tottenham are also in pot two apparently, but I think Conte does not actually do very well in Europe. Uh, I Yeah. don't think he has a great Guys, what record in happened? Europe. I What lost do my you think, Divya? connection, by the way. I lost my. What happened, guys? No problem. Yeah. Who Yeah. gone? No, they've not yet Anyone drawn. from the No, Oh, we by were the just way, analyzing Okay. the pot two. Yeah. uh, by the way, who's this guy? This guy doesn't look like a Leicester City ex-manager who won the league with them. Who's it? Claudio I Ranieri, no, don't think no, it's him, but it that's looks not like him. him. Yeah, but it looks That's like not him. that. He तो looks like him, हमसे yeah, says but it's not. दिव्या जी इस Yeah, चीज he को does. यूसीएल बोलते हैं यूरोप का एलिट खेलते हैं ओके ही इज अच्छा, टारगेटिंग बेसिकली ऐसा। याद है अभी And 6 महीने पहले तुम कहाँ थे? 6 महीने पहले कहाँ थे Aisa. तुम? वही यस वही दैट्स ट्रू एंथम गा रहे थे ना, ओ। Okay, Leipzig have been put into the first group. I believe Hmm. it was Group A, if I'm not wrong. हम्म So someone's coming up, someone's coming up. Group F. F. So group F. Okay, so this is for Man City, I believe. Yeah, Leipzig. So Real Madrid and Leipzig in Group F. Okay, interesting. Hmm. Okay, next up, Juventus. Juventus. यूए हम्म So they actually finished fourth in the league, if I या remember. But I think because they have this, they must be having a higher UEFA coefficient rating, and that's why they are Hmm. still in pot two. या Correct. yep and they have the money as well Correct. Yeah, Group H. The Juventus in group H. They are in हम्म Pavel Group Nedved. H with Paris Saint-Germain. So PSG and Juventus. It's gonna be fun. Paris Saint-Germain Juventus Yep. who's number 2 Spurs. Eh, Tottenham. Tottenham is going with where We'll have to see that. I think it will come now. Where is Spurs Tottenham going? Hotspur Where is Conte MCS boys says going? no C please I No. can see that hmm interesting Okay, the group for Tottenham is Group D. Hmm. Group D. First Frankfurt. So that's I didn't track Frankfurt. Hmm. एमचे आई didn't track Frankfurt. वही टीम जिसे तुमको आउट की थी. Ah, MK. Okay, Liverpool. Liverpool. Okay. they can get Bayern also Liverpool Let's see. Yeah, Bayern and Liverpool. Correct. मजा आएगा. Uh-huh. होना They चाहिए होना can. चाहिए. Bayern Liverpool. माने. बायन कौन MCS says देखते जीतते हैं? Barca हैं Bayern एमके का प्रेडिक्शन आता है कि नहीं Barca Bayern बारसा January बायन oh जनवरी. बारसा ओ बायन हो. जनवरी हो ग्रुप ए ए ग्रुप ए कौन में है ए कौन में? था ए नो में तो कोई स्टार्टिंग का नल्ला ही मिस है किया. आएगा अभी बताएंगे आई थिंक Ajax. आया Ajax. Ajax.
हायर। right. Oh, ठीक है। Hmm. चलो लिवरपूल got lucky this time. Hmm. वैंडर सर बहुत खुश है। हाँ Seville, ओके Sevilla. चलिए आपने सेविया एफसी, बारसा बायर्न फॉर एफएफएस भाई क्या हो गया क्या? Hmm. नहीं मालूम पड़ेगा. Sevilla, I think Sevilla will be in same group as नहीं वो Bayern. बोल रहे थे That's what I फ्लॉप feel. अगेन हम्म, इंटरेस्टिंग नाउ। ग्रुप G. जी Where's G? Man City हाँ है ना? ग्रुप जी G में में? या Man मैन City है सिटी ना? सी। मैन सिटी G में. यस यस हाँ मैन Man सिटी City. Hmm. ठीक है. Man City को केक हुआ के Man City हरा देगा. कुड बी। हाँ मैन सिटी तो आराम से आना। अबे आएगा अपना बारसा. देखो ये बारसा है. देखो ये डेफिनेटली बार्सिलोना है. 101% बोलता हूँ बार्सिलोना है. देखिए. एमसी बोलता है मुझे नहीं खेलना है। यस देखिए. यस यू आर क्या करेक्ट बोला मैंने? क्या बोला? और देख बायन डेफिनेटली बायन आने वाला है. डेफिनेटली बायन का ग्रुप है. बी और सी बाकी है. तो बी में बायन या है. सी मोस्ट में कौन लाइकली है? बाय स्पोर्टिंग है ना? सी में कुड कौन बी। है? नहीं बायन ही है. रियल मैड्रिड तो आ नहीं इसमें सकता है. पता नहीं एक में रियल हाँ मैड्रिड है ना. अभी तो रियल नहीं मैड्रिड तो आ नहीं सकता. तो बायन ही है. डेफिनेटली हाँ बायन हाँ मैड्रिड तो आने है. बायन ही हाँ है. देखो रियल मैड्रिड कहाँ नहीं आ सकता. हाँ एंड माय हाँ प्रेडिक्शंस ग्रुप वर सी. एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। ग्रुप सी यस आई थिंक हैज टू बी ग्रुप सी। हाँ यस एमशे भाई यू आर राइट You're back with Bayern. बट रिवेंज भी हो सकता है. इस बार रिवेंज ले सकते हैं हाँ कुड बी। लास्ट टाइम यस का. या या लेवेंडोव्स्की हाँ दूसरे साइड में इस बार. नॉट बायन ऑफ साइड कोर्स में. व्हाई नॉट या हाँ so it's going to be, हाँ oh again एग्जैक्टली it's वही going to be at Camp Nou. Again it's going to be at Camp Nou. First game. कैंप नो दोनों जगह होगा. अलियांस में भी होगा. कैंप नो में भी होगा. Yeah. चेल्सी चेल्सी रियल मैड्रिड इन सेम ग्रुप. Damn. हो अगले साला का कप नंबड़े, ये क्या नहीं लिखा है भाई? मिलान. सॉरी एसी मिलान. एसी मिलान एसी मिलान। चेल्सी. क्या बोल रहा है? अगले साल कप नमदे. वो आरसीबी वाला बोलते अगले हैं ना साला इस कप। साल कप नमदे. हाँ वैसा बोल रहा हो. अगले हाँ। हाँ साल कप नमदे. एसी मिलान चेल्सी अच्छा ग्रुप है। दोनों आई हाँ थिंक बट बोथ हाँ चेल्सी जीत जाएगा. पॉसिबली क्वालिफाई। चेल्सी एसी मिलान आर चेल्सी जीत गुड. जाएगा दे बट आर वही गुड बट चेल्सी विल या जीत जाएगा. चेल्सी कोई हम्म, इशू नहीं आएगा. ठीक एटलेटिको. है अभी एथलेटिको आया अबे किसमें आ गया एटलेटिको बट. एथलेटिको पीएसजी के मैन साथ सिटी। जाएगा हाँ पीएसजी के साथ पोर्टो भी जा सकता है। नहीं पोर्टो. पोर्टो हो ग्रुप गया बी. पोर्टो पोर्टो तो में अभी था सब ग्रुप हो गए राइट. अभी जो पॉट हाँ वन और पॉट ए और पॉट बी वाले हो गए. अब पॉट सी आएगा. हम्म। हाँ पॉट आएगा पॉट मेरे को तो ये लड़की कौन एक्सपेक्टेड है? ये एक्सपेक्टेड ही था कुछ भाई। जानी पहचानी लग रही है लड़की. बारसा बायर्न तो होना ही था हाँ भाई। हाँ ये हाँ प्रशांत ये लड़की हर कौन साल है? यही होस्ट करते हैं हर साल यही दो जन होस्ट हाँ करते हैं ये यही या करती इसलिए है. तो जान नाम उसका पहचान क्या? है हाँ हाँ वो बंदी का नाम बोरुसिया पता नहीं है वो डॉर्टमुंड. जो बंदा है ना जो हम्म. बंदा ना पेड्रो पेड्रो वो पहले सीएनएन में होस्ट आता था ये मेरे को याद अच्छा. है बाद में पता नहीं वो यूएफा में कब साल्जबर्ग. लग गया बट हाँ एमसी बोलता है इंटर नहीं किए बस। इंटरनेट के. अरे हाँ है. तोड़फोड़ हाँ ग्रुप हो जाएगा. फोर ग्रुप हो वापस। जाएगा शाख्तार. हम्म. इंटर. यप। ओहो शाख्तार दोनेत्स्क। नापोली नापोली चलेगा नापोली. एमके को हाँ नापोली भी हम्म। आ सकता है भाई. नापोली भी डेंजर ना है. कुछ भी। भाई रोनाल्डो या गया भाई. डेंजर है भाई स्पोर्टिंग लिस्बन. हो गया। गया कंफर्म हाँ ऑलमोस्ट हो गया है. हाँ हाँ स्पोर्टिंग लिस्बन मोस्ट प्रॉब्ली वही है. कॉट ऑफ साइड ने अच्छा बताया. अच्छा कॉट ऑफ साइड इसलिए इज प्रीटी डिसेंट. हम्म. हम्म। अच्छा अच्छा एमशे इसलिए बोल रहा था स्वप्नाल्डो टू लिस्बन अभी एमशे बोल रहा था तेरे आने से हम्म. पहले हम्म। हाँ मैं चेक कर लेता हूँ ट्विटर में. दिख रहा है क्या? स्पोर्टिंग सीपी। चलो अच्छा है, बेचारा रोनाल्डो यूरोपा लीग में तो नहीं खेलेगा हम्म. वापस या
एमशे बोलते हैं बायन यार. I understand एमशे. This time We possibly we can understand. give them टू बी some देख fight. देख एक सिंपल बात है, एक सिंपल बात है. टू बी द बेस्ट यू हैव टू बीट द बेस्ट. Beat the best. सही है ना? Absolutely. अभी नहीं एग्जैक्टली तो वही बाद ना. में तो फेस करना ही है तुमको. वही. हाँ वही ना. एग्जैक्टली. एडवांटेज है अगर इजी टीम्स मिलते तो तुमको, इफ यू कम ऑन टॉप, अगर तुम टॉप पे आते हो तो तुम्हारा जो राउंड ऑफ 16 का गेम है प्रीटी कंपैरेटली इजी मिलने का चांस ज्यादा है. हाँ वही और अभी तो एग्जैक्टली. होम अवेज की वही. है ही नहीं एडवांटेज. हाँ इसलिए निराश मत हो एमशे. That's एमशे. अच्छा अब ये ओके. पता नहीं कितना एक्टिविटी. रिलायबल है ये कॉट ऑफ साइड, बट बोल तो रहे लोग रोनाल्डो 99% एसएससी डन. नापोली है भाई. नापोली आगे बाय द वे. नेपोली लेट्स सी कौन है. किसमें नेपोली कौन सा ग्रुप में? देखना पड़ेगा. इट कैन बी ए बी अभी आ और रहा सी है. बी. ए होगा, बी होगा, सी, डी, एफ, ए आया. जी, ए आयैक्स एंड लिवरपूल. आयैक्स लिवरपूल नेपोली. आयक्स लिवरपूल ना. ओके. गुड ग्रुप. हम्म. गुड ग्रुप. Although Ajax अभी अच्छा ग्रुप है, मस्त they है. might not be the same one. Although अभी Ajax या शायद करेक्ट उतना करेक्ट. वही dangerous मैं नहीं बोलता हूँ. होगा. नेवर But नेवर still. नेवर अंडर एस्टिमेट योर अपोनेंट. हाँ. एग्जैक्टली. बट लिवरपूल विल वॉक अवे. लिवरपूल टॉप कर हाँ. देगा. दे विल नॉट आराम वॉक से अलोन. टॉप दे कर विल वॉक देगा. अवे. हाँ they will walk away. विल वॉक. Salzburg. Okay, let's see where साल्जबर्ग Salzburg goes. इसमें देखते हैं. एफसी साल्जबर्ग तो इसका ना ऑस्ट्रियन टीम है. ऑस्ट्रियन ग्रुप या ऑस्ट्रियन टीम. हाँ. Austrian माने जाते हैं. champions. माने 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 का टीम था. माने. हालैंड का भी था. हाँ. साल्जबर्ग. हाँ वो भी Salzburg में ही था. अच्छा. हम्म. हाँ ये से क्या बोल रहे क्यों न्यूट्रल जो है ना किसी को वफा साउथहैम्पटन के का. बदले वफा नहीं मिलती. क्या हो गया भाई. गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई क्या. वो बोल रहा है क्यों किसी को वफा के बदले आयैक्स नहीं मिलती, उसको आयैक्स किया था. अरे रे यार. हाँ. ई मिला. ई ग्रुप पे गया. ई ग्रुप पे क्या? ई तो मिलान और चेल्सी है. ई है ना? यस. हाँ. साल्जबर्ग साल्जबर्ग किसमें ई मिलान में और है? चेल्सी. नहीं नहीं नहीं. यस. हाँ साल्जबर्ग हाँ ए में ये है. में है. अच्छा ओके. नेक्स्ट अप अभी इज कौन सा? बेंफिका. बेंफिका का चालू है. बेनफिका. तो बेनफिका कैन बी इन ग्रुप सी, ग्रुप डी, एफ एंड एफ, जी, एच. बहुत सारे ऑप्शन है बेनफिका के लिए. आई थिंक वो पोर्टो के ग्रुप को छोड़ के वो कोई भी ग्रुप में जा सकते हैं. हाँ करेक्ट करेक्ट. पोर्टो को ग्रुप इसमें जा सकते हैं. हाँ. पोर्टो ग्रुप बी में. ए में तो जा नहीं सकते हाँ. क्योंकि ए में ऑलरेडी चली गई. ई में भी जा नहीं या सकते साल्जबर्ग. तो वो चला गया साल्जबर्ग. तो ए बी ई हाँ. छोड़ के कोई भी ग्रुप आ सकता है. हाँ. ग्रुप एच है. एच. एच. ओ पीएसजी, पीएसजी और यूवेंटस, यूवेंटस आ पीएसजी. बेनफिका. गया. इंटरेस्टिंग. हम्म. इंटरेस्टिंग. बेनफिका बट का मैनेजर पीएसजी अच्छा है. हो जाएगा. बेनफिका हाँ. का कौन मैनेजर है. अच्छा है. बहुत बहुत अच्छा हाँ. मैनेजर है. कौन आई है. डोंट और वो रिमेम्बर हिज लास्ट नेम, टाइम. बट लिंक था. या ही वाज लिंक विद यूनाइटेड. अच्छा मैनेजर है बहुत. ये क्या हॉर्गे हेजुस नहीं ना. नॉट हॉर्गे हेजुस नहीं ना. नहीं नहीं नहीं. और वो तो नहीं. पहले था. पहले अभी एक कुछ टाइम पे नाम वो भूल गया था. उसका मैं. अच्छा मैनेजर बहुत. Portugal is producing a lot of good coaches, huh? बोरोसिया डॉर्टमुंड. हाँ इवन इवन Oh, स्पोर्टिंग का भी अच्छा मैनेजर. स्पोर्टिंग का मैनेजर भी हाँ. अच्छा है बहुत. हाँ. डॉर्टमंड है क्या Okay, Man City, इसमें? yeah, Man City, Sevilla and Dortmund. अरे वाह 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 वाह. ये ग्रुप अच्छा हो गया अच्छा था. अच्छा अच्छा ग्रुप है. अच्छा ग्रुप है. हाँ. अच्छा इंटरेस्टिंग ग्रुप. हालैंड और गोज मैन बैक टू सिटी से भी डॉर्टमुंड. ये डॉर्टमंड और सेविया में अच्छा मैच होगा. सॉरी. हालैंड गोज हालैंड बैक टू वर्सेस. डॉर्टमुंड ना. हाँ हाँ हालैंड हालैंड वर्सेस रिटर्न्स टू डॉर्टमंड. डॉर्टमंड. यस. हाँ लेवरक्यूजन. एग्जैक्टली. लेवरक्यूजन था ना अभी. हाँ. लेवरकुसेन. लेवरक्यूजन. हाँ. So they will दे not कांट गो be इन बायर्न in ग्रुप. the बायर्न एंड लाइप्जिग. Bayerns or and ग्रुप Dortmund. बी. बी में गए वो लोग. हाँ बी में गए. पोर्टो, एटलेटिको एंड लेवरक्यूजन. पोर्टो Oh, एटलेटिको का अच्छा है बे. वॉक केक वॉक है एटलेटिको को. cake ओके. walk. एमशे बोलते So हैं Bayern, बारसा Barca, बनाम Inter. इंटर. हाँ बायर्न. मोस्टली. हाँ. अभी इंटर आया नहीं हाँ. है ना. हाँ इंटर ओके. कांट स्पोर्टिंग गो क्लब इन. से. स्पोर्टिंग क्लब से पोर्टुगल. स्पोर्टिंग लिस्बन.
तो Okay, एक so सी they और डी, can be A, B, E, दे F, कैन बी विद G, सी, F. सी आना चाहिए, चलो सी आना चाहिए तो अच्छा है वो। हम्म। बायन बारसा स्पोर्टिंग। Hmm. बार्सिलोना को लास्ट लास्ट में भी पोर्चुगीज क्लब मिला था। डी, हाँ, आइटन तो ट्रैक एंड ग्रुप। स्पर्स, इंटर ही है। हाँ, इट्स हाँ, इंटर। लास्ट टाइम बेंफिका ने हराया था ना, आई थिंक पोर्टो था, हम्म। बेंफिका था राइट। बेंफिका। हम्म। वो मैनेजर बहुत अच्छा है बेंफिका, इवन स्पोर्टिंग का मैनेजर अच्छा है बहुत, दोनों के मैनेजर अरे बहुत मस्त है। बट लुकाकू पोर्टुगल है में क्या एक से उधर? एक अच्छा मैनेजर आता रहता है सर। याया टूरे में। ये याया टूरे या नहीं है या क्या, कुछ भी बोल मत चल। अरे याया टूरे तो अनाउंस कर रहा है। शाता डॉनी नहीं बे, याया टूरे नहीं है, कुछ भी बोलते हैं। नहीं रे, याया अरे टूरे जो नहीं ड्रॉ है। कर रहा है वो याया टूरे। जो ड्रॉ नहीं, कर रहा है वो आई बोलता डोंट है थिंक याया याया टूरे टूरे है। है। अरे उसका नाम क्या याया आएगा, टूरे, टूरे अग्री। यार? अच्छा तो क्या रहेगा, होता है? सॉरी सॉरी, हाँ। तो लग नहीं रहा यार टूरे तो। अरे शाख्तर भाई। डोनेट्स किसके साथ है? हाँ, चल बायन बारसा शाख्तर, बायन बारसा शाख्तर चल। ये मिला ना रियल मिलान को। हाँ, ओके, हाँ, अभी रियल इंटर मिला, है। हाँ इंटर इंटर। इंटर। अभी इंटर ही मिलेगा। ये एमचे नहीं एमचे नहीं पनौती लगाया है, मैं बोल रहा हूँ एमचे नहीं पनौती लगाया है। बायर्न, बारसा और इंटर हो गया डैम। ग्रुप ऑफ डेथ। अग्रिम भाई, यूरोपा भी कम बुरा नहीं है। यस, दैट्स ट्रू। हाँ, देखा। हाँ, अब आए लाइन पे। नहीं नहीं, बट आई थिंक बारसा विल गो थ्रू, शुडंट बी अ प्रॉब्लम, इंटर को हरा लेट्स देंगे। सी। लेट्स सी। हम्म। डिपेंड्स ऑन द लेट्स सी। फर्स्ट नहीं, गेम। इंटर अभी इंटर इज लाइक बिकॉज इंटर आर अरे नॉट अच्छा एट द कोच। पॉइंट। अच्छा कर नहीं, सकते वो जावे लोग। इज अ बेटर कोच, जावे इज अ बेटर कोच देन वो पहले वाला तो कुमन तो यूजलेस था, तो फिर रखा है कि तो इतना अरे उसको। नहीं, नहीं हाँ, कुमन का गलती नहीं थी, मैं बोलूं। द प्लेयर्स वर नॉट मोटिवेटेड आफ्टर दैट 8-2 डिफीट। कोई मोटिवेटेड नहीं हाँ। बट था वो नहीं, टीम। कुमन ऑर्डिनरी मैनेजर है यार, वो मतलब नहीं अच्छा यार है, वो ठीक है, ठीक है इतना बट यार, खास नहीं है। हाँ मतलब वी कुडंट डू मच विद दैट स्क्वाड ना, हम्म। बट इमेजिन मतलब है अच्छा, बट बारसा लेवल का नहीं है मैनेजर वो, टू कोच हाँ, ही इज बार्सिलोना लाइक अ वो है मिड मैं मैनेजर टेबल वही नहीं बोल है। रहा हूँ ना, एंड हाउ ही मिड टेबल मैनेजेस द कोच है। नेदरलैंड्स टीम ना। मैं वही बोल रहा हूँ, हाँ, हाउ डिड ही मैनेज द नेदरलैंड्स टीम ना। हाँ, हम्म। वही बोल अरे रहा हूँ ना नेशनल वो। टीम अलग होता है भाई, नेशनल टीम हाँ, मैनेज करना अलग होता अरे हाँ, बट है। उसके प्लेयर्स बारसा भी तो इज, देखो ना। द प्लेयर्स ही हैज गॉट एट नेदरलैंड्स, ही हैज गॉट व्हाट यू कॉल, क्या नाम है इसका, वैन डाइक, वैन डे बेक, डेयोंग, डिपाय, गैक्पो, ये बट सब अभी तो ये वो है ना, प्लेयर्स। अभी तो लुई वैन वान गाल हाल है। है। नहीं, हम्म। वैन हाल स्टेप डाउन ना, बिकॉज ऑफ अभी आई थिंक वैनगाल है, उसका नहीं नहीं, वैन हाल आ नहीं, गया नहीं नहीं, वापस। वानगाली है, वैन गाल ही है। वानगाली है, वानगल बीमार था, वो कुछ तो था इशू, हाँ, कैंसर जैसा दैट्स व्हाट कुछ आई था, एम बट लाइक। ही रिकवर फ्रॉम इट, ही स्टिल द अच्छा। मैनेजर, ओके, हाँ, वानगाली है। आई डोंट नो। आई थिंक वैन गाल का भी थर्ड वर्ल्ड कप रहेगा ये हॉलैंड के साथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। थर्ड या 2014 सेकंड? में था। सेकंड सेकंड। हाँ 2014 14 में में तो था। वो लोग थे सेकंड ही, चल है। हाँ जब वो लोग हाँ, आई नो, जीते थे। हाँ। बट इवन बिफोर जीते दैट नहीं थे उसने भाई, शायद लिया था। थर्ड थे, हाँ, थर्ड थे, जीते नहीं थे, क्या? बट वो वर्ल्ड कप 2014 जर्मनी जीता था। क्या भाई, हाँ, क्या बोल मैं रहे हैं? जीतने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ हाँ, मैनेजर मैनेजर 2014 बोल में रहा जब वो लोग बट वो सेकेंड ये फाइनल उनका पहुंचे थे। मैच बहुत लेजेंडरी था, स्पेन को उन्होंने हराया था ना 5-1। है। फर्स्ट हाँ, गेम, फर्स्ट गेम था। हाँ भाई। अरे वैन पर्सी का वो देख डाइविंग के तो हेडर। एडवर्ड वुडवर्ड खुश हो गया था। वो देख के ही एडवर्ड वुडवर्ड ने उसको साइन किया ना, वो मैच देख के ही। क्या क्या था। हाँ भाई, बस। सेल्टिक या क्या ये है, जो सेल्टिक अभी, सेल्टिक, तो जो सेल्टिक अभी गया बारसा के ग्रुप में। सेल्टिक ठीक है, हारा देंगे बात। ठीक है, सेल्टिक नॉट अ बिग डील। सेल्टिक और रेंजर्स को सिर्फ स्कॉटलैंड में ही लोग जानते हैं। और सिर्फ हम्म। ये यूके का प्रेस ही वो लोग को हाइप करता है, बिकॉज दे आर स्कॉटलैंड। बाकी कुछ या नहीं। और एक्चुअली पता है, अगर आई थिंक सेल्टिक ना प्रीमियर लीग खेल सकता है, सेल्टिक और रेंजर्स को अगर डाल दो ना प्रीमियर लीग में, विद अ बहुत पहले बेटर ऐसा बात चालू था, पता। बात नहीं बहुत चालू पहले था ऐसा ऐसे, बात बट एक्चुअली नहीं। हुआ था, प्रॉपर प्रॉपर फिर नहीं हुआ। फाइनेंशियल एडिंग अगर मिलेगा ना सेल्टिक और रेंजर्स हाँ, को, दे कैन बी अ वेरी गुड टीम। हाँ, वही मतलब द नेक्स्ट पर्सन हु, अच्छा, दे आर इन द ग्रुप विद मैड्रिड एंड लाइप्जिग एंड शाख्तार। हाँ,
नहीं वो बट वो हम्म वो तो आउट है बेटा, ये लोग तो। हो गया, नहीं, मैं क्या निकल बोल गए रहा ये हूँ, लोग यूरोप रेड से। बुल क्लब्स दोनों एक ग्रुप में है क्या? आई डोंट थिंक सो। आ, नहीं नहीं नहीं, नो, नहीं नहीं, ना? कांट बी, आई डोंट, बट दे इट कैन कांट बी, बी। they have played against each other in They the have played, past. but they हम्म, cannot be inside the same नहीं group नहीं नहीं, with the करेक्ट same करेक्ट name. करेक्ट. So Leipzig is in group F and Salzburg is in group E. हाँ, करेक्ट करेक्ट हाँ, करेक्ट, अच्छा, सही, ग्रुप, दो अलग ग्रुप में. ओके, ओलंपिक बट दे दे मार्से। हैव प्लेड each other. यूरोप में दे हैव प्लेड each other. यूरोपा लीग में दे faced each other, खेला है from क्या? what I हाँ, recollect. आई डोंट हाँ कभी रिमेम्बर, नहीं, याद नहीं आ पिछले रहा मुझे. साल जैसे हाँ, ड्रॉ ना हो। हाँ, पिछले साल, yes, ग्रुप sir. डी, जो स्पर्स, और कौन है? आइटन Okay, ट्रैक, फ्रैंकफर्ट, Frankfurt, ओलंपिक Spurs, मार्सेल, Lisbon and Marseille. स्पोर्टिंग. ओलंपिक मार्सेल में एरिक बेई गया अभी लोन पे. हाँ, वही, उसका एक बहुत ही एरिक बेई इज अच्छा वीडियो बना उन्होंने, उसको इंट्रोड्यूस गॉन. करने के लिए ऐसा वीडियो बना वीडियो जैसे कि बनाने में सब 100 मिलियन एक्सपर्ट का है. असाइनमेंट। अरे वो आई नो। वीडियो देख के मुझे लगा 100 उनके मिलियन का लिए वैसा ही असाइनमेंट है वो ना, बोलेगा। उनके लिए वैसा ही हाँ, है, बिकॉज दे कांट अरे बट अफोर्ड वो बिग लोन नेम पे गया प्लेयर्स. है। हाँ, हाँ, बट लोन पे फॉर गया, बट लोन प्लेयर। इट्स एन ऑप्शन और एन ऑब्लिगेशन टू बाय इफ ही plays certain amount of हाँ games and if they qualify for the Champions League. So हाँ, if the option right, then becomes obligation. So currently option to हाँ, buy, but if they qualify for Champions League or he plays certain amount of games, that become an obligation. अच्छा अच्छा है. काजी पिछले गुड साल चीज। जैसे ही ड्रॉ हो रहा है. पिछले साल जैसे. आई नो मैन। बस बार्सिलोना पहला गेम जीत जाना चाहिए बायर्न के अगेंस्ट। ग्रुप जी. दैट विल डिसाइड, तो ग्रुप दैट जी विल इज डिसाइड द मैन मेन सिटी, थिंग। सेविया, डॉर्टमुंड या एंड कोपेनहेगन, एंड कोपेनहेगन. गया क्या कोपेनहेगन। यार, एकदम बेचारे बेचारे को, वो लोग, उनको यूरोपा सब लीग लोग भी के नहीं मुंह मिलेगा, उतरे थर्ड प्लेस हुए भी हैं। नहीं आएगा. हाँ, वो लोग के मुंह उतरे हुए हैं ना थर्ड प्लेस भी सबके, नहीं आएगा इसलिए। उनका. हाँ, हाँ, वो ग्रुप में कि क्या मैं आएगा? यूरोप से वो बाहर। मैन सिटी सेविला डॉर्टमुंड जो ग्रुप है ना, उसमें सेविला थर्ड आएगा. फिर वो लोग यूरोपा लीग हाँ में आएंगे और फिर यूरोपा हाँ, लीग के लिए वो कॉन्टेस्ट यूरोपा करेंगे. लीग वो यूरोपा जीतेंगे। लीग स्पेशलिस्ट है वो हाँ लोग, सेविला. हाँ, वो लोग यूरोपा लीग स्पेशलिस्ट है, यस, एग्जैक्टली। वो लोग वही करते आ रहे हैं। ओके, क्लब ब्रूज। क्लब ब्रूजे लास्ट टाइम पीएसजी को क्लब मिला ब्रूज था, क्लब इसका ब्रूज। है ना, ये मैनेजर है ना, विंसेंट कंपनी मैनेजर उसका, क्लब ब्रूज का. हाँ हाँ, नहीं नहीं, या वो तो एंडरलैक्ट का है ना। सॉरी, एंडरलेट का, माय बैड, सॉरी, माय बैड, माय बैड. हाँ, हाँ, एंडरलेट. बिकॉज वो वहीं से आया था, एंडरलैक्ट से आया हाँ, था वो। एंडरलेट. हाँ, एंडरलेट, एंडरलेट. अंडाले। और कंफ्यूज होगा, दोनों सिर्फ बेल्जियम ग्रुप है ना, दोनों एंडरलेट और ये या हाँ दोनों भी बेल्जियम या क्लब या है ना. हाँ, या हाँ, तो दोनों उसमें बेल्जियम में। ओके, so they are ठीक paired है। with Atletico, Porto and Bayer Leverkusen. अच्छा अच्छा. हम्म, थोड़ा बहुत अपसेट का चांस है, मतलब उनको। आई डोंट नो हाउ वेल दे विल प्ले, बट अगर तो अपसेट करना है तो एक अभी ग्रुप में कर सकते हैं। तो अभी ए रह गया है, सी रह गया है, डी रह गया है, नहीं, ए सी ई और एच रह गया है, तीन रह गए. हाँ, बारसा को तो मतलब तो ये पिटाई कौन है ये? पड़ने वाली है, ऐसा लग रहा कौन क्लब था, कौन सा क्लब था ये? है। वही देख रेंजर्स रहा हूँ मैं। रेंजर्स रेंजर्स रंगर्स। था, ए और सी. ओ माय गॉड, रेंजर्स भाई इधर नहीं आ जाए भाई बारसा के इसमें। रेंजर्स का हाँ, अच्छा क्या टीम है है भाई? रेंजर्स. दे आर गुड, नहीं, अच्छा टीम है, दे आर गुड, दे गुड. या फाइनल में आए थे वो लोग. या हाँ आई नो, हाँ वही हाँ, तो बोल रहा यूरोपा हूँ। लीग नहीं पे। नहीं. नहीं, हाँ, कॉन्फ्रेंस लीग यूरोपा पे। लीग में, कॉन्फ्रेंस लीग में, कॉन्फ्रेंस लीग या यूरोपा लीग में, यूरोपा लीग में, नहीं, यूरोपा लीग में यूरोपा लीग के रोमा ने फाइनल में आए किसको थे. हराया था? यस यस. दे लॉस्ट टू हाँ आइटन फ्रैंकफर्ट. हाँ, okay. रेंजर्स, या तो ग्रुप लिवरपूल के साथ है. हम्म, ओह, स्कॉटिश। आयस, लिवरपूल, नापोली एंड रेंजर्स। हम्म. ए बी. कौन है ये अभी है? डायनामो किएव। डायनामो कीव. नहीं नहीं नहीं, क्रोएशिया का है ना, तो वो हाँ, जे डिनामो एन जागरेब। के. हाँ, डायनामो. डिनामो जी एन के जागरेब, डायनामो, कोई नया क्लब जागरेब आया. जागरेब। अरे नहीं रे, जागर डिनामो जागरेब है जागरेब। क्या? हाँ, जागरेब है। जागरेब। अच्छा, डिनामो जागरेब है क्या? हाँ मॉडरिच का पुराना क्लब। हाँ, हाँ, मॉडरिच का क्लब पुराना, आज करेक्ट करेक्ट.
रेंजर्स इट इज। एमजे बोल ओ रहा है रेंजर्स इट इज। हम्म एमसी को पहले ही अपडेट मिल रहा है। एमसी हाँ स्पॉइलर दे रहा पहले हमें। ग्रुप ई, तो ई में कौन है? मिलान, चेल्सी, रेंजर्स ही है, रेंजर्स ही है। सो रेंजर्स, बारसा, बायर्न और इंटर। वाह, तोड़ फोड़ ग्रुप है वो, हाँ तोड़ फोड़ ग्रुप है। एनीथिंग कैन हैपन इन दैट ग्रुप, एनीथिंग। मतलब चारों टीम हाँ टक्कर। डोंट अंडर एस्टिमेट रेंजर्स, हाँ बहुत सही खेलते हो हाँ लोग, मैं फुल हाँ हार्ट भाई मैं तो दे किसी को खेलते हो लोग। किसी को भी नहीं कह रहा भाई। अच्छा तो खेलेंगे बट आई डोंट थिंक दे विल चैलेंज मच। नए नए बहुत तकलीफ देते हैं। अब पीएसपी को हराया वो लोग ने अभी, एग्जैक्टली। पीएसवी पीएसवी को ना, आइंडोवन हाँ को हराया उन लोग ने। नाइन हाँ, तेरे डाउन को को पता रहा है है वो कोच तो कौन पता है? है। तेरे को पता है मेरे को कोच कौन है? वैन निस्टेलरॉय है ना? नहीं नहीं, नहीं, रेंजर्स का। पीएसवी का मैन रेंजर्स। इसका ये है पीएसवी का वो, वैन निस्टेलरॉय। फिलिप कॉकू, आई रेंजर्स थिंक का। फिलिप कॉकू। नहीं नहीं, रेंजर्स का फिलिप जियोवानी। कॉकू, कोई डच ना ही है। ना जियोवानी वैन जिवानी ब्रोंकोस। बॉन्ग, हाँ हाँ, वो वैन वैन डच ही है, ब्रोंकोस। डच ही है, बरक। हाँ ही एक्स रिप्लेस जेरार्ड, बार्सिलोना करेक्ट जियोवानी वैन करेक्ट। ब्रोंकोस। बॉन ब्रोंकोस, एक्स यस। हाँ बार्सिलोना हाँ, प्लेयर भाई। एक्स बार्सिलोना। हम्म। तो बहुत सारे एक्स बारसा प्लेयर्स, एक्स बारसा कोचेस भी आ गए। इंटर, इंटर में कोई हाँ है क्या बारसा का एक्स प्लेयर कोई? होगा तो कोई सब तो। हो अरे जाएंगे। है ना, आर्तुरो विडाल। विडाल है ना। आर्थर, आर्तुरो हाँ विडाल। हाँ, इंटर में आर्थर अभी ये गया वो, हाँ ही वेंट टू हाँ साउथ ना, वो अमेरिका चला ना। गया, वो चला गया यार। ही लेफ्ट फॉर चला सम गया, अदर क्लब। फिलहाल नहीं है इंटर में हाँ वो। ही हाँ, वेंट बैक टू इज साउथ इन अमेरिका। ब्राजीलियन लीग। ब्राजील, हाँ, कोई क्लब में है वो। हम्म हाँ, फ्लामेंगो, आई थिंक फ्लामेंगो में था। हम्म, बड़ा नेक्स्ट अच्छा है, सही है, सही है। विक्टोरिया मस्त प्लेजेंट। ग्रुप है। हम्म। ग्रुप वो सी, बायर्न, बारसा, इंटर। विक्टोरिया नहीं मिला नहीं तुम नहीं लोग नहीं को? नहीं, विक्टोरिया प्लान। विक्टोरिया क्यों? प्लेजेंट। रेंजर्स नहीं है, रेंजर्स नहीं है, रेंजर्स नहीं रेंजर्स नहीं मिला, है। चलो। चलो ठीक है, नॉट बैड। हम्म। चलो अरे सही है। भाई क्या मैंने नाम है? लड़कियों को इधर देखा है, मैंने ये लड़की को आउट ऑफ यहाँ से, इसके बाहर मैंने कहीं देखा है इसको। आई डोंट रिमेम्बर, नॉट यूएफा, यूएफा में तो नॉट आती है बैड। हर साल, बट कहीं और बाहर भी देखा हम्म। है मैंने। हाँ देखा रहेगा वो। एक्टर तो शायद से, मॉडल या एक्टर से कोई। हाँ। तो एमसी पूछते हैं ये कौन है भाई? कौन हाँ, कौन? वो एमसी कौन एमसी कौन? पूछते हैं एफसी विक्टोरिया प्लेजेंट कौन है भाई? हाँ, चेक साइड है। चेक यस रिपब्लिक का। चेक रिपब्लिक के चैंपियन जो बोलोगे हम लोग को। यस। मतलब बोलोगे हर और क्या साल या है? तो विक्टोरिया प्लेजेंट आता है, या तो स्पार्टा प्राग, या तो स्लाविया पाटा प्राग, प्राग, दो टीम हाँ, आती पाटा प्राग, है। हाँ पाटा लास्ट था, टाइम हाँ वो लास्ट टाइम तीन लास्ट चार टाइम स्लाविया टीम ही स्लाविया है वही। स्लाविया हाँ। प्राग में जाता बाय द वे। हाँ चेक, क्या बोल रहा है? अग्री। लास्ट टाइम स्लाविया प्राग मिला था। हाँ राइट, स्लैब प्राग एग्जैक्टली, मिला था, स्लाविया करेक्ट। प्राग। हाँ। हो गया फिर फाइनल, सारे चार सारे के सारे ग्रुप हो हो गए गया, फाइनल। हो गए ग्रुप सब। ये देख भाई, ये लिखते हैं विक्टोरिया टर्बेज बोरी बंदर एफसी। विक्टोरिया टर्मिनल, बोरीबंदर एफसी, और क्या बोलते हैं, सीएस सीएसएमटी सीएसएमटी एफसी मेरे एफसी। को ये तो पीछे ये पड़ेगा। एम टी एफ। अरे बस। अडानी एफसी। अडानी एफ सी। एनडीटीवी एनडीटीवी एफसी। एफ सी। एनडीटीवी एफ सी। वही बहुत बहुत ही उम्दा। बाय द वे, हाँ। अरे प्रशांत वो ये फेसबुक पे चेक करना, पूरा ग्रुप से आ गया क्या? फिर शेयर मार के अपन डिस्कस करते हैं उसको। कौन सा ये जो शेयर हुआ वो, मतलब ये ग्रुप हाँ चैंपियनशिप का? हाँ हाँ, चैंपियंस लीग का हम्म, यूएफा चैंपियंस लीग किसका आया होगा ना? देखो, मैं करूंगा तो मिल जाएगा, दिव्या शायद कर पाएगा। हाँ, दिव्या भेज पाएगा तो शावी को ग्रुप पे, बोलना। देन आई कैन। नहीं, हाँ। मैं हम्म, फोन पे हूँ। आई अच्छा थिंक अच्छा, तो मैं। गाइज, आई आई विल हैव टू लीव द स्ट्रीम, थोड़ा कुछ काम है आगे घर ओके। पे। तो हाँ आई ठीक विल है। शेयर अच्छा। द, ये मैं मोबाइल पे शेयर करता हूँ तुमको, जो ग्रुप हाँ आ ठीक गया है। है, हाँ एंड आई वो, हाँ, देन तो वी वी कैन कैन पॉसिबली डिस्कस डिस्कस। चलो ठीक है, चलो गाइज, थैंक करते यू, हैं। चलो थैंक चलो, यू अंशु भाई, बाय। ऑल द बेस्ट। बाय बाय दिव्या। बाय मिलते बाय हैं। बाय बाय दिव्या। बाय। बाय। एमशे बोलता है जावी को बोलना दादर स्लो में बैठ के जाने को। यस सर। यस, दादर दादर स्लो स्लो में में आएगा टिकट तो लगेगा। हाँ, दादर सलोना, दादर सलोना। दादर से लोना, अरे हाँ। यस, क्या बात है। अच्छा, अभी ये लोग का कोच, कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड चालू है।
तो एंसेलोटी का मिलेगा विमेंस इनको। कोच, हाँ विमेंस कोच ये सरीना वाइगन को मिला, जो अभी हम्म। इंग्लैंड की यूरो की कोच थी, तो शी इज या गॉट इट, वेल डिजर्व। अभी देखते हैं ये बाकी दूसरा किससे मिलता है। दिव्या ने शेयर मारा है, लेट मी जस्ट शेयर एंड लेट्स डिस्कस। दिखाई दे रहा है प्रशांत? नहीं दिखाई नहीं दे रहा है? क्या बात कर रहे हो? नहीं, मैक्सिमाइज करना, अरे रे, ये हो गया, उल्टा उल्टा हो गया। मिरर हो गया। हाँ आई थिंक, हाँ सॉरी माय बैड। अभी आ रहा है? अभी दिख रहा है? मिरर हो रहा है, चल मेरे लिए, फिर से ऐसा मिरर हो रहा ऐसा है? ऐसा। हाँ इसको कैसे करते? नॉर्मल मैं शेयर स्क्रीन पे जा रहा हूँ तो एंटायर स्क्रीन आना चाहिए ना। हाँ अभी आ हाँ रहा है? अब हाँ, हाँ, अभी ये इमेज अच्छा, को मैक्सिमाइज कर, इमेज को मैक्सिमाइज कर, वही कर रहे हैं। वो हाँ विंडो, विंडो है ना, विंडो को मैक्सिमाइज कर ना, विंडो जो है वो इसमें है, तो जो व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप के विंडो को मैक्सिमाइज कर पहले। हाँ, हाँ ये देखा? अब आया, अब दिख रहा है। सो इट्स ओके। Ajax, Liverpool, Napoli, Rangers in Group A, हम्म, and then आयस followed by लिवरपूल, Napoli, हाँ Rangers, and Group B में है पोर्टो, एथलेटिको मैड्रिड, बायर लेवरकुसन, क्लब ब्रुज। हाँ, ठीक है ग्रुप सी। ऐसे रन थ्रू नहीं करते, अपन सीधा हाँ, सीधा बोलते हैं कि वी जस्ट गो थ्रू वन ईच ग्रुप एंड से हु द या क्वालिफायर्स विल बी। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जैक्टली। ग्रुप है आयक्स लिवरपूल नैपली रेंजर्स है, सो आई थिंक लिवरपूल तो इसमें श्योर शॉट है ही, नैपली हम्म। रेंजर्स और आयक्स के बीच में टफ होगा, and या Rangers are pretty good apparently. They've done well. So Rangers और Napoli will be के बीच में थोड़ा ज्यादा टफ होगा, and maybe या Napoli will make it in the end. I think हम्म। Napoli will go through. You know, इटली के टॉप फोर में है वो, तो they should हम्म। get the better of the other. What about you? What हम्म। do you think of this group? I think possibly, I think Ajax and Liverpool will go through because Napoli has gone through some changes. They have missed out this guy, no, what's his name? Koulibaly on defense and हाँ, attack. They don't have Dries Mertens, and also they don't have this guy, no, what's his name? Lorenzo Insigne. Insigne. okay, So I okay, think all there right. could be there could be a possibility where they can struggle. Okay. Yeah, let's see. Hmm. But they are Yeah. they're an Italian side, so defensively, Yes. they should be fine. Attack Yeah. might be quite difficult for them. Okay. In the Yeah. That's meanwhile, true. Ancelotti has been awarded as the manager of the year. So I Hmm. just like to point that out. So Congratulations to not a him. surprise there. Yeah. Yeah. It was So expected only. Yeah. it was expected exactly. Yeah. I was actually disappointed like in 2020 when Hansi Flick did not win it. Like Hmm. they gave it to Jurgen Klopp instead of Hansi Flick, and even Jurgen Klopp was surprised. So yeah, Yeah. so that I remember. That was a very unjust year to Bayern. Even Lewandowski Yeah. didn't win it. Hansi Flick also didn't win it. Anyway, That's Group true. B: Yeah. Porto, Atletico, Bayer, Leverkusen, and Club Brugge. Hmm. I guess Porto and Atletico, right? What do you think? Hmm. I think Atletico Madrid and Bayer Leverkusen can possibly go through because Bayer Leverkusen has that sort of German mentality inside their system. They can press Hmm. well. I've seen some of their games. They press actually really well. They have got this player called some Palacios, if I'm not wrong. He's a very good forward for Argentina as well. So I think he can be a good addition for the Leverkusen squad.
And whereas Okay. Atletico is concerned, I think Atletico has not got any player. I think they sold off Suarez and they got Morata Hmm. inside Atletico. So I don't see Atletico struggling, but Porto I don't see them going through again. All right. And Group C would be Bayern, the group of death, right? Bayern, Yes, group of death. Barcelona, Inter, and Hmm. Victoria Plzeňa. MC's Yeah. nightmare, right? Uh, Hmm. so obviously we can take it for granted that Victoria Plzeňa will not really do well. They are Hmm. likely to be the whipping boy of the group. So Hmm. that leaves us with the other three. Uh, Yes. do you think it will be Bayern and Barca, or do you think Hmm. Inter will maybe eliminate one of these two? I mean, Bayern, I don't see them even getting eliminated. But Yeah. what Me do you too. think between Barca and Inter? This will be see. I will see this match. I mean, this group after like possibly uh, four games. 4 games after that I can decide, because this is a very tough fixture to decide. I mean, tough group to decide on, in my opinion, because anyone can upset anyone, and Hmm. Inter can possibly beat Bayern as well. You never know, like in two fixtures, and they can be on top. Hmm. So it all depends on how they play. Whereas Barcelona is concerned, I think good additions to the team, but I have to see like how they perform at the European stage. Hmm. No, but Yeah, Barca hmm. will do well, I think. But Inter uh, under I mean under the current coach, I don't know how they will do. I think last season also they did get through to the last Yeah, 16, but yeah. this will be a little hard to predict. But I think maybe Barca and Bayern will be too good for them. Hmm. So I It don't all see depends on Inter. how. That's why I'm saying that it all depends on like how Bayern approaches this game against Barca at Camp Nou. The first game is at Camp Nou, Hmm. by the way. Oh, okay. Yeah, All right. So yeah, Group D, Eintracht yeah. Frankfurt, Spurs, Was hmm. Sporting Lisbon, and Marseille. Marseille. So Hmm. yeah, This uh, again is a very tricky group. Anyone can uh, possibly go through, in my opinion. I think Spurs should yeah. be going Spurs should be fine. like easy. Yeah, Yeah. except for like Eintracht Frankfurt, Sporting Club, and Marseille. I think Marseille can possibly create an upset for these two teams. Mhm. What do you think? Yeah, Marseille can create an upset if any, Yeah, but most likely the favorites would be Spurs and Frankfurt because Frankfurt did obviously win the Europa League, so they are pretty good. They are a yeah, decent side, right? So yes, yeah. Uh, okay. Next up, yeah, AC Milan, yeah, Chelsea, Salzburg, Zagreb. mhm, Okay, I yeah, think it's pretty straightforward. yeah, Chelsea and Milan. I don't think yeah, Salzburg will or Zagreb will challenge them. mhm, Um, yeah. and yeah, if you can just Wait, take off MC's comment, I will see Group F. wait a second. Scroll What down has a little happened? further. Yeah, zoom I'll into just the. wait a second. I need to just close the WhatsApp. What does MSH says? Just a second. जावी को बोलना दादर ये क्या बोल रहा है बारसा वर्सेस मैन यूनाइटेड इन यूरोपा फाइनल No, Barca won't come to the Europa League. let's see, like it's going to be a very tough fixture, because again Barcelona has been given the group of like vicious beating. Yeah, let's see. Yes. Okay. So again, let's go back to the main. Hmm. So it's AC Milan, Chelsea, in my opinion. They will be going through. You go for the same Hmm. thing, Prashant. Yeah, if you can just maximize that group again. That group, yeah, AC Milan and Chelsea will go through. But I was Yeah. looking at Group F, which is Real Madrid, Leipzig, Hmm. Hmm. um, Shakhtar Donetsk. Real Madrid.
Okay. Hmm. And who are the fourth team? I can't see that. Celtics. Celtic. Okay. Hmm. Yeah. Okay. Madrid and Shakhtar have been drawn together for the Third, third consecutive third time. season. Yeah. Yeah. The only thing is Inter were actually missing in this, if I'm not wrong, right? The, Yep. these three were in the same group for the past two seasons. So Yep. yeah, interesting. I actually, because of whatever situation is in Donetsk right now, so Hmm. maybe if Shakhtar do something, if they get through, that would be nice to see them play well. Hmm. But Yep. based on stats, I think it will be Madrid and Leipzig going through Hmm. here. Even I'll be Uh, going for the Real Madrid and Leipzig as like yeah, front runners for like advancing the group. yeah, And and moving on to the Group G, Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund, Copenhagen, FC Copenhagen, however you want to pronounce it. What yeah, do you think, Prashant? yeah. So Man City undisputed winners of the group. Yeah, Uh, absolutely. it will be close between Sevilla and Dortmund, right? Yeah, even I Dortmund will see that way. Yeah. Haaland will be returning to Dortmund as you had pointed out. So Yep. that would also be interesting to see how that work pans out. Yeah, Uh, that's true. yeah, but I don't know how good Dortmund are now without having Hmm. Haaland in their ranks. So They had maybe this guy, just no, Man City and Sevilla. I think they have Daniel Malen and they had Sebastian Haller, but Sebastian Haller is going Sebastian on to Aller, surgery. yeah, Yeah, exactly. So he's not playing anymore. So yeah. unfortunately, That so will be an yeah, I think issue it's for the Dortmund. City and Sevilla. Yeah. I go possibly, I think Dortmund can still create an upset for Sevilla, possibly in like one fixture, I think, one of Mhm. the fixtures. Or possibly they can go on like advancing through, what do you call, uh, how should I say, goal difference. Goal difference where they Mhm. can advance. Okay, all right. Final group: uh, Yes. PSG, Juve, Benfica, and Maccabi. Maccabi Haifa. Hmm. So I guess PSG and Juve are pretty straightforward. I don't see them Yeah. putting much of Same. a challenge. Yeah. Yeah. Same here. I'll go for PSG way. I don't see like any team creating an upset for Juve or PSG in this group. Yeah, absolutely. So yeah, that would be the Champions League draw. Uh, Europa League draw is coming up. Maybe I will watch that as a United fan. I Yeah, don't we know can if watch. it's there right now. We Yeah, can watch actually the but Europa League. is it What on did right now? I'm Wednesday? not sure. Yeah, because it's going to be on within 15 minutes. Madrid's annual loss to Shakhtar. Yeah. Yes, yes, yes. Will it You be are Barca or absolutely Bayern? right. Yes, because they need to complete most of the fixtures possibly by like October end. So they have to, I think, give some rest for like 5 to 6 days, and then the World Cup will resume from that from there on. Yeah, correct. MCA says we will watch the Europa fine. I don't want to, but if you want to, be my guest. Yeah, yeah. I'm also. I mean, I think we'll just discuss it later on our later show. Not for today. Yeah. Yeah. Okay, cool. So thanks a lot to all our viewers. Thanks a lot, MJ, for your comments. And Yes. we'll see you guys again very soon. Yes, I'll see you guys soon. All right then. Take care. Ciao. Bye. Bye.